All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Saud, Malik, and welcome to another episode of My Jaik podcast. और दोबारा की तरह हमने अपनी position बदली है because again we have a very special guest today and her name is Pervaiz. Hello, Mary. Hi. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? Mary, what do you do? And क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ये लोगों को पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप बता देना. So Mary जो है एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये दिमाग पढ़ती हैं. जो हम जैसे लेमैन होते हैं, हम अक्सर ये सोचते रहते हैं ना, the questions to ask a psychologist के ये तो सब पता होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के ज़हन में आते हैं वो मैं पूछूंगा और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे इंटेलेक्चुअल स्टफ की तरफ. सो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताएं, स्टडी बैकग्राउंड कहाँ से पढ़ा, इस फील्ड में कैसे आई? पाकिस्तान में तो इस फील्ड का स्कोप है ही नहीं, तो फिर क्या सीन था? Funny thing, I was telling my mom अभी थोड़ी देर पहले कि I think that there were about 157 students who graduated from FC with me in psychology. And 157? Yeah, Okay. and I don't know anybody who's doing the amount of work and the kind of work that I'm doing. I think that मेरा background तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई fancy like a typical regular nerd student. I did my O-levels, उसमें मेरे business subjects थे, then I did my A-levels and I went crazy and I had Islamic studies, psychology, sociology and food and nutrition, and this was literally out of just impulse. In O-levels? In A-levels. In A-levels. Why And you then- took Islamic studies in A-levels? Because I was so curious, Saud. I was so curious and I was so confused with the whole concept of religion, because I think that when you hear something else and then when you're taught something else, this automatically becomes a topic of curiosity. And as a young teen, where you're interacting with diversity and एक साइड है आपकी सोसाइटी की जो उसको सेलिब्रेट करना चाहती है और दूसरी साइड आपकी सोसाइटी की वो है जो उसको कम्प्लीटली स्नब करना चाहती है. सो दैट गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग. तो मुझे लगता है कि इट वाज अ गुड डिसीजन एंड मोर देन जस्ट इस्लामिक स्टडीज इट फेल्ट लाइक कंपैरेटिव रिलीजन टू मी, बिकॉज आई ग्रेड आया आपका? A star at माशाल्लाह, वेरी नाइस. मतलब कि इसको तुमने समझ के पढ़ा है फिर तो? patient के साथ पढ़ा मैं. Very nice. अच्छा, continue. Yeah, so that happened and then I went to FC, and FC was again a place which I think most people talk about this. You were in my batch as well, and We never interacted in we FC. never interacted Yeah. because you were this cool boy gang and I was this nerd. And you were this cool girl जो कहती थी ये is yeah. Okay, so continue. I can't anyway. So I think that FC mein when I came in, so again a lot of people think that maybe everybody needs to have a plan, you need to have a direction. एक somewhat एक हल्का सा पता होना कि okay, this is what I want to do, but I don't think that I was as career oriented and all of this जो कि अब eventually मैं बन गई. One thing that I think that really helped me find that direction was me having this freedom from home, that whatever you want to study, whatever you want to do, you're free to do so. वो अलग बात है कि I was this nerd who was just 7 subjects पढ़ रही हूँ एक semester के अंदर. Even when I वो जो एक exchange program बहुत famous where we go to and apply, पूरा FC apply कर रहा होता है. When that happened, I remember kids were just not studying more than 3 subjects. और मैं अमेरिका में हूँ, 7 सब्जेक्ट मैंने रखे हुए हैं. मैं सैटरडे को लाइब्रेरी में 2 बजे 2:30 बजे तक बैठ के असाइनमेंट्स बना रही हूँ, and everybody else is partying and they think I'm stupid to do so at that कितनी देर time. रही हो तुम अमेरिका? I stayed there for 6 months and it was an exchange program. और उधर कुछ भी नहीं देखा दुनिया में फिर? नहीं देखा यार, तो पढ़ रही थी साथ में, time मिल रहा लेकिन yeah, of course. लेकिन I think that the kind of partying and the kind of culture that maybe जब एक देसी यहाँ से निकल के जाता है और वो सोचता है कि ओ ये मैं देखूंगा जाकर, I think I was never really attracted to it. Because मुझे ऐसा लगता है कि here even in Pakistan you can get all sorts of exposure, depends on who you're hanging with, who you're with, who you're friends with. तो मेरे लिए कोई ऐसा attraction थी नहीं. वहाँ पे आप दुबई एयरपोर्ट पे जाते साथ ना सारे बच्चे वो लिकर स्टोर में चले जाते हैं कि हम देखे जाए कौन सी बोतलें पड़ी हैं. I'm like bro क्या हो रहा है यहाँ पे. So yeah, this was a little bit of my educational background. Psychology sort of happened because I was interested in sociology to begin with. This is why I'm a double majors. I did sociology and psychology. Psychology because I thought that, okay, if I want to
materialize what I'm interested in, so sociology might not be a great idea. Because sociology, then you end up becoming a teacher or professor. Generally, people don't really, although in the outside world you are still considered to be a counselor, but here because already हमारे पास licensing नहीं है और therapist को पास या counselor के पास जाने में और मसाइल होते हैं. ये होता क्या है, concept ही नहीं है यहाँ पे. Yeah, so sociology और psychology दोनों became helping hands to each other for me to be this person that I am today professionally. How many siblings are you? We are 5. We're 4 sisters and we're 1 brother. And आपका क्या number है? I am the oldest. You're the oldest. Oh, okay. अच्छा, तो बाकी सब क्या कह रहे हैं? It's me. I do what I do, and then my younger sister, she's a digital marketeer. The third sister, she has her salon and she's got her own boutique. My youngest sister, she's a doctor of diet and nutrition and a model and an actress. Very nice. My brother is just studying. And yeah. Okay. Achha, so coming back to the thing you're doing. जब हम अपना career choose कर रहे होते हैं, मैं अपनी example दे देता हूँ. I wanted to be a cricketer. तो मेरी अम्मा ने मुझे बैठाया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखो, क्रिकेटर तुम इसलिए नहीं बन सकते, यहाँ पे उस जमाने में 14 या 16 करोड़ आबादी होती थी, तो तुम कहाँ सिलेक्ट हो गए, सिफारिश नहीं है. मैं क्या सही कह रही हूँ. फिर बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच मूवीज एंड एवरीथिंग, आई वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. ओह वाओ. आई रियली लव्ड द आइडिया, यू नो, ऑफ समवन जिसकी आप बात सुनो, उसको अंडरस्टैंड करो, बताओ उसको. फिर वो जैसे बैठते थे एंड एवरीथिंग. फिर मैंने मुझे कहा बेटा इसमें पैसे नहीं है पाकिस्तान में. आई ड्रॉप्ड द आइडिया. तो नाउ यू आर कंटिन्यूइंग दिस एज अ करियर. तो फैमिली की तरह से भी खुद भी ये तो सोचा था कि पाकिस्तान में तो स्कोप है नहीं इसका, तो मैं ये क्यों कर रही हूँ. Yeah, that's a good point. You know what? My first job as a psychologist was at a rehab. And I saw 3 deaths with overdose. I saw a very immoral, unethical way of working. It was apparently one of the best rehabs in Pakistan. But I saw the most unethical things that you could think of. और वो एक बहुत ही पढ़े लिखे तरीके के साथ उसको जो है ना कवर कर दी गई हो. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे करिकुलम में, द करिकुलम दैट इंस्टीट्यूट, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैड, द फर्स्ट बुक दैट वी वर सपोज्ड टू स्टडी वाज हाउ टू सेल टू द एफ्लुएंट. एंड सो दिस वाज फिर थोड़ा सा इंस्टिल किया गया, एंड आई ऑब्वियसली डिड नॉट रीड दैट बुक एंड आई डिड नॉट कंटिन्यू वर्किंग देयर. इट वाज ओनली 1 month. But it was instilled that this is a luxury service. It is not for people who cannot afford it. It's not for the middle class. Upper middle class ने अगर ये करना है तो this is an extra luxury that they would want, right? So पाकिस्तान में स्कोप नहीं है अगर आप कन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे तो. और मेरा ख्याल है कि आप किसी भी अगर फील्ड में हो, किसी भी करियर में हो आप, if you're thinking कि मैं जैसे traditionally, if you have a playbook of how to be an actor, of how to start a podcast, if I follow the same thing, I might not be successful in it because you've got your own way of doing it, right? So I think that अगर मैं conventionally उसी तरीके से करती जैसे बाकी सब कर रहे हैं, तो I would have ended up doing the same thing. That is, end पर जब आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप किसी स्कूल में मैथ और हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं. और it's a shame to the profession. It's a shame to the 4 years that you've spent, or maybe not just bachelor's, but then अगर लोग masters कर रहे हैं, अच्छा लोगों को literally even the people who are studying it, उनको भी ये नहीं पता होता कि what is the degree that will take me where. So for example, ज़्यादा थोड़ा एकेडमिक पॉडकास्ट हो रहा है हमारा भी, लेकिन 4 साल का आपने बैचलर्स कर लिया, फिर उसके बाद ये लाइक हाँ वो फलाने ने एमफिल किया था, फिर उसको यहाँ पे नौकरी मिल गई थी, फिर उसने ये कर लिया था, ओके लेट मी डू दैट. यू रियली डोंट नो व्हाट योर डायरेक्शन इज. सो आई थिंक कि मेरा सिस्टम चेंज थोड़ा इस वजह से हो गया, बिकॉज दैट एक्सपोजर दैट आई हैड देयर, वहाँ अमेरिका में एक हमारा यूनिवर्सिटी में देयर वाज दिस होल काउंसलिंग सेंटर. सो आई गॉट टू नॉट जस्ट टेक थेरेपी फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो associate myself with another counselor. So that helped me professionally. When I came back here, I saw that this is not how people practice, and I wanted to somewhat bring that psychological essence here. It's not crazy if you're talking to somebody and they don't necessarily have to be in a clinic. So I deliberately have an office and not a clinic. I am very approachable and very reachable through social media. Instagram played a big role in this whole thing as well. I started to make smaller videos and, short videos, jo ke
educate bhi kar rahi hu. Initially it was very professional, very formal, all that, but now I figured, and this is the feedback from my clients and people who watch, that the more human you are, the more relatable you are, the more people will connect with you. And I think I could never do that I am always going to sit like this, और एक psychologist का तरीका होता है, glasses लगाओ और कपड़े ऐसे पहनने हैं और पता नहीं क्या ही दरमियान में, you know, I'm the kind of maybe person who would just do whatever feels right. I'm very mindful, I'm very present. So you asked me, okay, let's do this podcast. I did not stalk you, I did not stalk the podcast. I was like, okay, let's do this. Okay, but listening to all of this, yeah, for chalo, as an actor तो we look up to people. हम actors देख रहे होते हैं, Robert Pattinson है, different है, पुराने भी, Al Pacino. Who do you look up to in your career? Career. I think, as I said, it's unfortunate that I don't have a role model. I don't know anybody who works like me. I don't know anybody who does everything that I do. If you'll speak to any psychologist and then you'll show them maybe my Instagram, ये क्या हो रहा है, मतलब why is she training people, and also why is she in corporate, why is she on television, why is she also you're doing a lot of stuff. You're that cool psychologist. I don't know. I thought you're a model. फिर मैंने कि इतनी psychology कर रही थी, क्या हो गया भाई. हाँ ना, तो Instagram पे अगर आप जाके चेक करें मैरी परवेज को, तो आपको भी ये लगेगा. Okay, so this is why I did not first. मुझे बहुत ज़्यादा ना लोगों ने confuse भी किया इस मामले में, क्योंकि they wanted somebody to just be straight, right? Straight in the sense that you're just straight doing what you're supposed to do. Psychologist है, कमरे में बैठ के आपने counseling करनी है, वहाँ से निकल जाना है. Have a very serious and very conventional way of looking, of talking, of interacting. My social circle is very diverse. I think that has to do a lot with how I look at life, because I don't mind hanging with somebody who's 19 and also somebody who's 45, because I see them as stories, I see them as perspectives, and not as, oh, what is this going to look like when I am doing this or when I'm gonna be with them. आपकी अपनी कुछ personal boundaries और values होती हैं, but at the same time, I think that I'm very open to diversity and newness. That's not a word I just made up. Okay. Newness. And this is why I think I'm able to do what I do, and I don't have a role model. That was your question. अच्छा, अब लोगों में, because बचपन से हम सुनते आ रहे थे, तो डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज होते थे, इसको हम लोग एड्रेस करते ही नहीं थे, हमारे लिए होते ही नहीं थे. अब बिकॉज सोशल मीडिया है, अवेयरनेस है, लोग देखते हैं सारा कुछ, तो अब लोगों को आइडिया हो गया कि हाँ यार ये एक चीज़ है, इसको सीरियसली लेना चाहिए. ऑब्वियसली बाहर के मुल्क तो पहले सीरियस लेते थे, हम पाकिस्तानी तो हर चीज़ को कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, देखी जाएगी. तो अब मुझे ये बताएं कि अब जो केसेस यू फेस या यू ट्रीट, ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, या बैलेंस्ड है, और यंग जनरेशन है कि क्या, मतलब कि रेशो किस तरह आप लोग कह सकते हैं? I've been very fortunate in this regard that the age group that I deal with, it's between 13 to 45 plus. Okay. It's a global fact that any counselor, any therapist would always have more traffic of opposite gender. If you would have been a psychologist, you would get more females. Sad that you're not. Why is that? Sad that you're not a psychologist, Saud. It's okay. Life is. Do you still get traffic though? No. It's just पॉडकास्ट कहीं और चला जाएगा, ये सिर्फ देखने में लगता है, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, that was a real question. अच्छा, anyway, so it's a fact that you get opposite gender. अब इसका एक serious जवाब है, इसका serious और scientific research जवाब ये है that people think that the same gender might not be as understanding of me. So, for example, a guy crying in front of another guy is not acceptable at any societal level, and you would feel judgment from the other person. So question. Yeah. Okay. The question is, हम लोग हमेशा दोस्तों में या लड़के आपस में बात करते हैं कि एक लड़का बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लड़की और लड़का भी बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन लड़की अच्छी दोस्त नहीं हो सकती. Is that true? नहीं. तुम लोगों के पेट में तो बात नहीं रहती एक दूसरे के, कैट फाइट एंड एवरीथिंग, तो फिर
तुम लोग जनरलाइज कर दिया पकड़ के, मतलब यू मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एंड यू आर लाइक यू तुम लोगों फर्स्ट टाइम एवर हाँ मतलब पर्सनली स्पीकिंग ऐसा हम कभी वी नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन. आई थिंक नहीं ऐसा नहीं है. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन. इट डजंट मैटर व्हाट जेंडर यू आर. आई नो अ लॉट ऑफ गाइज जिनके पेट में बात नहीं रह सकती है, ठीक है. सो इट्स अ पर्सनैलिटी इशू, इट्स द वे दैट दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड इट्स नॉट व्हाट जेंडर दे आर. ओके. सो ज़्यादातर लोग आप जो टीनेज भी हैं, बड़े भी हैं, यंग भी हैं, वो सारे आ रहे होते हैं. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बंदा डिस्कस करता है आके, फीमेल है या मेल है, वो क्या चीज़ डिस्कस करते हैं या क्या है इश्यूज क्या है मेनली? टॉप 3 बता दें. I think the primary issue that we have is family. I think हमारे जो फैमिली डायनामिक्स हैं, मैं रिलेशनशिप से उसको थोड़ा बालकनी व्यू दे रही हूँ फैमिली का, क्योंकि हमारे जो फैमिली डायनामिक्स हैं अभी तक, आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द 3rd or 4th जनरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. आपका जो ट्रॉमा ग्रीफ का जो DNA है, it goes up to 9 generations. And I think that we have not yet recovered from what our ancestors have gone through. And so we are taking the baggage, और जो आपका social dynamic जिस तरीके से change हुआ है, first it was super slow, and then as soon as technology comes in and internet comes in, and now we're a confused generation. Because this generation, not just even हमारी generation, हमें लगता था कि oh maybe they don't understand, but the generation 5 years later, us, they think we don't understand. And now it's every year. आप हर बैच के अंदर आप देखेंगे कि हर बैच के अंदर आपको लगेगा कि हम शायद पेंडू हैं, ये इनको कुछ और पता है. Like they know something more than us and we are unaware. You have to constantly be updated if you want to catch up with them, or you stay content कि यार ये मेरी जिंदगी का सिलसिला था, ये मेरी information है, this is how I see life, and I don't have to be in this race to catch up with what this new person is doing, right? So family dynamics इसलिए ज़्यादा बड़ा मसला है क्योंकि parents are still, I remember this mom once, she goes like, we were in this training at a school, and so we had first students and then parents and then teachers. So this is how I took the whole training. Kids tell certain problems of what's going on in their lives, and this was between the ages of 13 to 17 years of age. ये age group था बच्चियों का. The moms, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, one of them, she goes like, I am so mad at my daughter because we give her 15K उसका pocket money है, और एक दिन मैं उसके रूम में जाती हूँ and she was doing something online, and I said बेटा what are you doing, and she said कि मामा मैंने एक coding course online उसके लिए register किया, so I'm doing that. And I said, why are you mad at her? That is such a good decision. No, but she's so independent and I think that she needs to take permission from me. And I thought to myself that maybe as parents, we just cannot see that our child is not dependent on us anymore. So I think वो जो family dynamics जो कि control, control और micro management और जो है ना कि dependence के ऊपर जिनकी control भी इसलिए करते हैं शायद क्योंकि वो भी कंट्रोल हो चुके थे अपने ज़माने में, फिर वो ट्रांसफर करते हैं आगे से आगे. राइट. सो दिस इज बिकॉज वही उन्होंने देखा है, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी लर्निंग यही है कि ये सही है, एंड दिस इज हाउ वी शुड पेरेंट. सो आई थिंक टू बिगिन विद द फैमिली डायनामिक्स, उसके अंदर फिर अब इसको अगर डिवाइड कर दूं मैं, तो पेरेंटिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी issues. People are not trained of how marital life is going to be like, और उसकी वजह से फिर marital issues होते हैं, और फिर उसके बाद obviously relationships are a common thing. Do you deal with married people? Of course. But you're not married. How can you deal with married people? You don't know the issues? हाँ, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपना तो ऑपरेशन किया नहीं था, तो मैं तुम्हारा what answer यार, very good answer, very good. अच्छा, अब what is your like specialist किस में हो? तो मुझे नहीं पता है क्या चीज़. I'm a counseling psychologist. I'm a counseling psychologist, so I counsel people. I don't take clinical patients. So clinical psychology is when you deal with
retardation or okay. कितना टाइम लगता है वैसे एक बंदे को अगर आप काउंसल करते हो? Do you give them time कि यार इतने सेशंस लो and you'll go through? It's very subjective. Okay. It's very subjective. लेकिन ये है कि I generally don't drag a person if this is maybe they come with a problem which is not my area of expertise, और मैं उनको अच्छे से उनको refer कर देती हूँ. Sometimes people would choose you, people would find you, literally head hunt you when they have to find a psychologist, because हमारे यहाँ क्योंकि ये एक taboo है, so this is why they want to go to somebody that they can relate with. And I think that this is why मेरा audience जो है वो भी they're usually people who are aware, who know what क्या scene है, कैसे psychologist के पास क्या बात कर सकते हैं, मेरा issue क्या है, थोड़ा they're educated, they're mostly younger, and I'd say that 13 to 45 today is still 45 is the new 35. That's what they say. अच्छा, बहुत tough नहीं होता किसी के साथ express करना और अपनी problems बताना? तो होता है? I guess बहुत tough होता किसी को बताना. Okay. मुझे ऐसे लगता है. When was the last time that you think that you were able to express to someone? I knew this would come. You'll start taking me as your patient. Okay. Session start हो गया. Okay. So when was the last time I expressed to anyone? I don't think so. I remember. It's been a very long time. मेरा नंबर आपके पास है, राब्ता करें. आप देखा, मैं आपको बताता हूँ. आपका नंबर भी है और I am sure you'll be there for me and I am sure I have friends and everything. But someone who is like me, I don't want to express. Why? I don't know. I think this would help. This conversation would help a lot of people who would have the similar mindset. Yeah, maybe. That is why I'm talking. Okay. So what I think is, why don't I want to express is because maybe in the past I've expressed to people, friends, and जो भी हो, family, friends, जो भी हो सकता है, और मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मैं सुनना चाहता था, या फिर उस रिस्पॉन्स से मुझे कोई फायदा होता, या फिर ज्यादा बात बिगड़ गई इन सेंस कि मैं ज्यादा हर्ट हो गया, या मुझे समझ नहीं आई उस चीज की कि फायदा क्या एक्सप्रेस करने का हो नहीं सकता. सो मे बी डीप डाउन इनसाइड आई कन्विंस्ड माई हार्ट एंड माई माइंड कि ब्रो अब जो है किसी को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. विद द सोल ओनली आप अकेले आए हो, अकेले मरना, बट ठीक है आपने. सो दैट मीन्स कि आपने फियर के साथ ऑपरेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज यू वर फियरफुल ऑफ बीइंग हर्ट, यू वर fearful of not being understood, you were fearful that if I tell something that this person might betray me by ये बात इधर उधर जा रही है और क्या हो रहा है, and I might also be judged, right? So I think कि जब हम fear से operate करना शुरू कर देते हैं, before the podcast started I said that as an actor you're probably also very aware about emotions because you are trained to depict emotion all the time. And your answer was interesting, so I want you to repeat your answer. So my answer was कि हमें immature actors को ये लगता है कि acting करेंगे बड़ा मजा आएगा और एक डिफरेंट दुनिया वर्ल्ड होगा, बट एज हम ग्रो करते हैं और छोटे छोटे रोल्स करना शुरू कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वी आर ऑलवेज एक्टिंग. एंड आई गेस इट्स नॉट दी ओनली द एक्टर्स. जो भी एक लड़का है, लड़की है, एक सर्टेन एज के बाद, बिकॉज लाइफ है ही इस तरह की, तो आप हर वक्त एक्ट कर रहे होते हो. True. So you're always playing a role, always, and everybody is. यहाँ पर इस decorum में बैठने के लिए भी we are playing a role, right? मैं अगर I can't trust people because of what they've done to me in the past, I think that in itself stores in your body as grief. You are hurt, you are betrayed, you are made to feel that you have done something that is worthy of judgment. और इसलिए हम फिर बहुत कॉशियस हो जाते हैं और बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बिकॉज वी आर सोशल बींग्स हु आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग आफ्टर आवर सोशल इमेज. तो वो जो आपका आइडियल सेल्फ है, दैट्स दिस पर्सन जो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत कूल है और उसको किसी प्रॉब्लम से ना मतलब जिंदगी में मसला नहीं होता, एंड आई रिकवर लाइक दिस, आई मूव ऑन सो क्विकली. और क्योंकि वो सारी जो ग्रीफ और जो ट्रबल है, स्पेशली एज अ मैन, आई थिंक आवर सोसाइटी डजंट लेट मैन ग्रीव. sad, very sad यार, very sad. तो अब जब नहीं करने दे रहे हैं, so I think it's very natural for you to go inside that shell. But the thing is कि अगर हम दोस्तों के साथ और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं, this is why counselors exist. अब आप कहते हैं open up कैसे करना है. Open up, this is the job of the therapist, to help you be comfortable, to give you the answers that validate you a little bit so that you know that, okay, I'm not judged here. I am not, this is something which is confidential. This is, she's going to respect, or he is going to respect my privacy.
And this is how I can learn to start talking again. The first session is normally, okay, so you tell me about your history and we're talking in depth about session. A lot of times it only takes, I think, 10-ish minutes for people to start talking, because again they're paying and they want कि अच्छा जल्दी जल्दी मसला बताएं ताकि डॉक्टर साहब हल बताएं हमें. और हाँ, बट कितना टाइम लगता है इट्स वेरी सब्जेक्टिव. नॉर्मली आप किसी भी थेरेपिस्ट से बात करेंगे तो कहेंगे 6 to 8 सेशंस ले लो. बुलशिट. ऐसा नहीं है. 6 to 8 सेशंस ले लो, क्योंकि आपकी जो मसला है, आपका जो प्रॉब्लम है, इट्स सब्जेक्टिव. यू माइट जस्ट नीड वन कॉन्वर्सेशन. यू माइट नीड समबडी दैट यू आर टॉकिंग टू फॉर एवर. आई हैव क्लाइंट्स दैट हैव बीन टॉकिंग टू मी सिंस 3-4 years, and not because their problem exists, but because whenever they need me, they would book a session and they would want to talk. So do you like तुम दोस्ती कर लेते हो क्लाइंट्स वगैरह के साथ? इज दैट रास्ते में आता है तुम्हारे when you are रास्ते में तो आता है, लेकिन लेकिन नहीं करते. It's ethically not right for us. It's also professionally not right. Why? Because I cannot be a professional therapist to a friend. As soon as you become a friend, my attention would automatically go away. Exactly, that is what I'm saying. I think personally speaking, I've always dealt with zoning out. So my sisters, when they're talking and they're telling me stories, and I'll zone out to something else, and they'll be like, Mary, wapas aaja. Okay. So professionally speaking, I don't do that. I am there. I'm a great listener. I am communicating. I'm doing all of that. But if I'm a friend, I'm not saying I'm a bad friend. I'm probably a good friend. But I think it creates a lot of trouble otherwise. I can't. एक थेरेपिस्ट के साथ आप जब एक सेशन वो करते हैं तो आई एम सॉर्ट ऑफ बाउंड टू गिव दैट सेशन, टू टॉक टू दिस पर्सन, टू स्टे इन दिस कॉन्वर्सेशन. नॉट लाइक बाउंड उस तरह से कि हमारे पास राइट टू विड्रॉ नहीं है दोनों के पास, क्लाइंट या थेरेपिस्ट के पास. बट एट द सेम टाइम इट्स प्रोफेशनल. व्हेन यू आर अ फ्रेंड, आई यार आई एम बिजी, can't talk, see you later, अच्छा अब कल चल कर करते हैं schedule, this and that, जो भी है. So I think it's better to always know that your therapist should stay your therapist if you want to really so find that you help. can be better, in dealing with the client. Yep. Right. अभी तक जितने भी बातें चल रही है, I'm very proud of you. You're very good at what you're doing. Thank you. And you're doing it with all of your pure heart and soul. जी. That is very nice. Okay. ये कैसे पता चला आपको? I am assuming नहीं, जितना मैं psychologist तो हूँ नहीं, बट वो जो फील मुझे नजर आ रहा है, द वे यूर टॉकिंग, द वे यूर एक्सप्रेसिंग, इज के यू आर वेरी ट्रू टू योर करियर एंड व्हाट यू आर डूइंग. I always tell everybody that I live this. Because I think that जब तक आप जो काम कर रहे हैं, if you're just talking, it's small talk. It will show in how you talk. It will show in your body language. You will look pretentious. You look like you're wearing a mask. People would pick it up. Even a fool would pick it up. Fool कैसे pick up करेगा? वो शायद उसको words में नहीं बताना आता होगा. But they would not be inclined towards seeing you again. Because they'll know कि अच्छा feel नहीं आ रही है, vibe नहीं है. So you have to be real. Do you get tired because listening to someone is not easy? ऐसा हम लोग दोस्तों की नहीं, अपनी ही समझ नहीं आ रही थी, फैमिली की नहीं आ रही थी, यार ठीक है सब्र करता क्या हूँ. But you have to listen to the other person, then give a good feedback. Is that frustrating or, something like that? I had to train myself to snap out. And क्योंकि sometimes ऐसे होता है कि आपके पास, आप एक काउंसलिंग रूम में बैठे हुए हैं and one story is going on, and usually it's an emotionally overwhelming story. Your life story is emotional to you, and for me to empathize, I have to really be here. And as soon as you go, maybe somebody's already waiting outside. So मेरे पास 1 या 2 मिनट का टाइम है to snap out of that story, to get into this story. और दूसरा अपनी जिंदगी में तो मसले चल रहे होते हैं ना. Of course. तो how do you deal with that? So ethically, again speaking, you're supposed to take a counseling session every week yourself. A therapist is ethically supposed to take a counseling session themselves, because you've got your own life and then you're listening to so much. And I think that more than psychology, I do believe in what energy somebody brings in. And if you are sitting with somebody who's very low, और वो troubled हैं, किसी को anger issues हैं, किसी के emotional instability है, किसी की family में मसला है, sometimes the situations are so helpless and hopeless कि आपको पता होता है कि you are talking to this person. For example, मिसाल के तौर पे कोई domestic violence का केस है, ठीक है? And domestic violence is not necessarily just physical. It's also emotional and verbal and neglect and isolation, disrespect.
all of that comes under abuse as well. So agar ab aisa case hai, now this person is telling me that there is no way that I could be out of this relationship. ठीक है, I am dependent because of this, मेरे बच्चे हैं, मेरा फलां है, ढमकां है, जो भी है. अब I know that I cannot really help this person in the sense कि because ideally speaking you shouldn't be in this toxic relationship, but because you're here I can only speak to you about what can you do to manage with this situation. Next step ये है कि अच्छा चलो couples counseling कर लो, marital counseling कर लो. Most cases में the other partner thinks that oh you're crazy तो तुम जाओ, मैं तो सही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ. There was this funny quote that I was reading somewhere. It said that people in therapy are usually there because of those who actually need therapy. So हम toxicity की वजह से वहाँ पे बैठे होते हैं, लेकिन खैर ये है कि it gets tiring, it gets a little frustrating in the beginning when you're starting off your career. But then I think that as a professional, you have to train yourself to be this calm and composed. I've had days when, you're very upset yourself for something. And I remember training again myself, going in the washroom, literally looking like a maniac, smiling in the mirror, ke bhai wapas aaja, and then going back in my therapy room. And because I know that if my energy is low, it's a loss. Like I can't just be मैं random एक low energy के साथ मैं बातें नहीं कर सकती सिर्फ. I have to really be there. Oh, all right. Okay. So any funny incident? Can you disclose that? Funny, हाँ, without anonymous करके कर सकते हैं. हाँ, तो please ना do that. क्या funny है? मुझे तो नहीं ना बताई, तो आपने बताना ना मुझे. This happened, that happened. Because अब सारे cases true नहीं हो सकते. कुछ हो सकता है ऐਵੇਂ बस आगे जरूरत ना हो साइको उसको सेशंस की या something like that. अच्छा, ये वाला बेनिफिट ऑफ डाउट हमें हमेशा देना पड़ता है कि अगर कोई स्टोरी बिल्कुल आपको लग रही है बिजार कि यार ये तो रियल नहीं हो सकता, ठीक है. हाँ, एडिंग टू दैट इंसिडेंट जरूर बताना, बट ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं सेशन लेने आया हूँ, ठीक है, स्ट्रेंजर, कंप्लीट स्ट्रेंजर, और बिकॉज दैट इज माई साइड ऑफ द स्टोरी ना, और मैं उसमें 110% गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो भी इशूज है मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगा आपने तो कहना हाँ ये तो सच्ची स्टोरी, बट आइडिया हो जाता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, बीच में का फिशी है, गेम है. हाँ, body language I think is 70% of what you're talking. It's only 15-20% of the content, and the remaining 10% is your tone. That's the basic rule of communication and figuring out. Okay, we'll go to the funny incident baad hai. Okay, so coming to this particular topic, very interesting. Okay, so how do you judge? A judge term use kar lete hain. Analyze. How do you analyze the other person? So you watch how they are moving with their hands, body language, speak, tone, eyes. So tell us the tricks na thode bahut. सब बता दूं? बेस्ट फ्रेंड बना लो. ये पॉडकास्ट रूम ना फिर थेरेपिस्ट रूम बन जाएगा. But that's something ना. अच्छा, so body language is one of the main things. I think that with this social exposure that you get, it's very natural also to pick on two cues. How is somebody literally walking? How do they sit in the room? What is the physiological change जो कि कभी कभार उसके कंट्रोल में नहीं है. So how your eyes are blinking, अभी फिलहाल सोचते हुए कोई 4 दफा एक्स्ट्रा ब्लिंक हुई है ना. So your physiological change is sometimes not in your control. ठीक है? It's very natural. So you can control maybe your body language. You can train yourself to be very composed and very poised and all of that. But your physiology is something that you might not be able to. वो एक funny वो fact है. I don't know if it's true or not, but they say that if you want to find out if somebody is in love with you, look at their eyes. And their pupils will dilate. Like if they're smaller, they'll Is that true? मैंने बहुत सुना है. I don't know. There's no scientific proof. मैं पता करके बताऊंगा अगर कुछ हुआ कभी तो मैं बताऊंगा. ये मैंने There's no scientific evidence to this, but this is what they said. They also say when the girl is into you तो वो बाल फ्लिक करती रहती है. ये भी मैंने सुना था. ये बीमारी है भाई लड़कियों की. This is फ्लिक करना बीमारी है. या मतलब मैं नहीं कह रहा. Okay. मैंने यहाँ पे 6 दफा भी बाल फ्लिक किए होंगे and I'm not in love with anybody here. I'm sure. Okay. But okay. और दूसरा they say, okay, so this is a question. They say eyes are the gateway to the soul. So you guys analyze through eyes too. अच्छा, मेन चीज क्या है? आंखें ही है जिससे आपने देखना होता है क्या सीन क्या है? I think Saud, I think that it's the whole of you, but if I would just personally speaking, how would I pick?
I think I look at this triangle. Like it's not even the eyes. Okay. This. Okay. Judge, analyze me. I just want to see how good you are. So friggin' typical अभी ना कि judge me. बताओ मेरे दिमाग में फ्री का मेरा वो सेशन चल रहा है इधर, तो मुझे और क्या चाहिए? बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अभी? I think that we're excited and I think that you're also curious. I think that we're also slightly nervous because मुझे लगता है मैंने हल्का सा intimidate कर दिया by saying that oh I can figure. Maybe. Yeah. Maybe. Oh, okay. Okay, तो ट्रिक्स नहीं बताने तुमने, मतलब कि मैं बता तो दिया, बस यही है कि बॉडी लैंग्वेज है आपका मेन. इसका क्या करूं मैं? किसको क्या देखूं किसी को देख के? अच्छा, I need to, you want me to actually put it in words then? हाँ, tell the audience ना, कुछ तो फायदा मिले ना पॉडकास्ट का. I think, okay, so as soon as this person walks in, it takes you 7 seconds. 3 to 7 seconds is what is psychologically, scientifically proven that you form an opinion about someone. What are they wearing? What are they trying to show? How do they greet you? Matlab, for example, if you meet somebody professionally, aap notice karo ke we usually speak in English. Yeah. Because we want to show that I'm smart, I'm educated, I am very cool, and so this is why, this is the, you know, ye meri tone or language hai. ठीक है? The way that somebody wants to portray themselves, that shows me कि oh okay, we've got some self-esteem issues going on, this person is not really connected. And I'm not saying कि हर दफ़ा जब आप कोई greet करो अगर आप ऐसे बात करे हो, but one of the things is that what are you trying to show? What is it that you talk about? What is something that you think this is my passion or this is something that I'm interested in? If that's something that would show me that ये अगेन कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनके सोशल स्टेटस और सोशल इमेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वुड अगेन शो मी दैट द पर्सन इज नॉट एज कनेक्टेड. How do you एक बता दिया बस. Very nice, very good. But how do you judge or analyze के the other person is toxic? Toxic? Yeah. Red flags. सारे इकट्ठे आ गए मेरे दिमाग में. How do I know that somebody is toxic? I think when you start talking about things that you don't do in action. A lot of times, for example, a cognitive error है. Cognition is the way that you think and process and your memory. A cognitive error है of black and white. ठीक है? And somebody says that मैं सिर्फ yes or no and there's no maybe there. And they're very rigid about this. Somebody who is not letting another opinion walk in and they're not allowing a discussion, that is a huge toxic flag. Huge. Somebody might have an argument कि oh no, somebody has a stance. किसी का एक stance है और वो उसके ऊपर rigid रहना चाहता है या उस पर खड़ा रहना चाहता है. But rigidity, I think that's one of the most toxic traits that a person can have. Because you could change anything if somebody is willing to mold themselves. लेकिन अगर कोई बहुत rigid है कि नहीं जो मैंने कह दिया है वो सही है, it's either yes or no, and if it's me who decides that, so that I think is very toxic. What are the most annoying and bonge questions people ask a psychologist? I've stopped going to TV shows recently. You are all over the TV. मैं तो हर वक्त मॉर्निंग शो में आ रही हूँ और सारा कुछ हो रहा है. तो अब मैं ना उसको कम इसलिए कर दिया. One of the reasons is this, that I think that people don't do their research. And अब हम बात करें उनकी जो एंकर्स हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास सवालों की लिस्ट एक उनके पास पड़ी हुई है, वो पढ़ रहे हैं एक स्क्रीन के ऊपर से कुछ कंटेंट लिखा हुआ. बट आई थिंक कि वो इतना आर्टिफिशियल होता है कि मेरी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है. अच्छा, क्या माइंड रीडिंग वाकई में हो सकती है? अच्छा, किस किस्म के केसेस, अच्छा पेरेंटिंग कैसे, मतलब देर वेरी सरफेस लेवल. सो आई थिंक दैट कोई सवाल गलत अभी मुझे इसलिए नहीं लगता बिकॉज आवर सोसाइटी राइट नाउ इज इवॉल्विंग इनटू दिस अवेयरनेस. ठीक है, अभी तो हमने सीखना है, अभी तो हमने समझ. मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ कि यार जो कुछ मुझे पता है वो दूसरों को भी पता होगा, तो आई थिंक दैट वुड शो अ टॉक्सिक ट्रेट इन मी एज अ प्रोफेशनल. देन I cannot
if you're an engineer and you know how this thing works and I don't, and I ask you a stupid question, a question which you think is so stupid, Mary, ये simple बात है ना, ये तार यहाँ से लगी यहाँ से निकलेगी और उधर जाएगी, तो obviously Mary, but then I have to be a little considerate of this. तो stupid सवाल मुझे नहीं लगता कि कोई होता है, लेकिन you do get annoyed by repeated questions, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार 3 साल से अगर टेलीविजन चल रहा है और आप हर हफ्ते में 3 दफ़ा जा रहे हो और वहाँ जाकर अगर सिमिलर सवाल हो रहा है, तो पहले तो आपको थोड़ा सा लगता है कि चलो ठीक है, स्क्रिप्टेड हो गया, यू जस्ट गो, यू पुट योर मेकअप ऑन एंड यू सिट इन फ्रंट द कैमरा, बातें करो और चलो. बट देन जब वो एक रेगुलरिटी में चीज़ आ जाती है, देन यू आर जस्ट लाइक बस. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, पता क्या, इसमें उन चैनल्स कुछ हद तक उनका भी कसूर है, कुछ हद तक नहीं भी है. वो इसलिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई रन अ स्टार्टअप, अ कार डिटेलिंग बिजनेस, ठीक है ना. अब मुझे इस फील्ड में हो गए हैं 3.5 साल. आई यूज्ड टू वर्क इन अदर कंपनी, मैंने अपनी खोली, वो 3.5 साल, वो साल मुझे अपनी खोले हुए हो गया. मैं तकरीबन डेली की एक वीडियो अपलोड करता हूँ और एक ही चीज़ बेचता हूँ, कार डिटेलिंग. ओके. अब 3.5 साल उस कंपनी में, 1.5 साल इस कंपनी में, अभी तक लोगों के फ़ोन या क्वेरी आती है, ये क्या होता है जी, तो उनको मैं और लिटरली स्पून फीडिंग करता हूँ. तो मुझे ऐसे लगता है अभी जो मैंने एनालिसिस किया है कि किसी भी आइडिया को हमारे जैसे नेशन में इधर इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 10 साल लगते हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था. ये कार डिटेलिंग भी होती है यहाँ पे, हम लोग 500 की गाड़ी दिलवाते थे जाके. तो वो अब रोज की स्पून फीडिंग है. पहले मुझे भी लगता था यार इनको समझ नहीं आती, ये रोज बंदा एक ही सवाल मुझसे पूछते रहते हैं. या जाके पेज देख लो जहाँ पे स्टोरी लगी हुई है या वीडियो लगाई हुई है. बट आई डू गेट इट. आई थिंक दैट एज अ प्रोफेशन एंड एज समबडी जो कि इस काम को एज बिजनेस भी देख रहा है कि ये आपका काम है, तो यू हैव टू डेवलप दैट पेशेंस एज वेल. पेशेंस अगर नहीं, हम टॉलरेंस नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक दैट यू कुड बी able to pursue this for a very long time. How do you calm yourself down? I have a very disciplined life, I think. बहुत boring लग सकती है, but है disciplined. Disciplined life जो होती है कभी कभी boring तो हो जाती है, frustrating भी हो जाती है कि क्या एक ही चीज चलती जा रही है, वैसे नहीं चलता जा रहा. नहीं, मुझे लगता है कि my life is super happening. Okay. And it looks very boring because I don't put up a lot of my private life or personal life outside. I'll tell you how. So I wake up around 8-9 in the morning, ideally speaking. अगर किसी दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो that's not nice, but art now. I go to the gym, I come back, I make my breakfast, I start off my day with some maybe counseling sessions which are online, which could be my private clients. I consult corporates, so I would be in 2 to 3 different corporates जहाँ पे भी जाना होता है. Spend some chunks or hours of the day there. और उसके बाद शाम के time I keep myself free after 7 o'clock, so I could do whatever the hell I want. Proud parents? Very. I'm sure that is very nice. You're doing a wonderful job and you're very good at it. मैं दूसरी दफा कह रहा हूँ, so it's very nice. I think ये discipline वाली बात को मैं थोड़ा सा I want to expand on this because when a client would also come to me, and generally a therapist or a counselor or a doctor, they ask you what your routine is like. It really shows them that what is this person doing to take care of themselves. ठीक है, अब आप जो जिम जाते हैं, what are you doing at the gym? मतलब अगर हम जाते हैं और सिर्फ हम झूले लेके आ जाते हैं, हम बॉडी बनाने जाते हैं. हाँ, it's a spot where you want to maybe socialize, we want to see other people. You know, हर किसी की जो motivation है वो कहीं पर जाने की different होगी. ठीक है, somebody is going for body बनाने के लिए, and somebody is going for just staying active. Somebody is going because to relax their mind, to stay active. So that is something that helps me a lot, and I've been going to the gym for good 12 years now. I was 17 when I started to do this. Very nice. Yeah, so that has been something that remained consistent. Meditation is one thing जो कि I was introduced to about 7 years ago. It took me 4 years to say this with confidence that it works. Or why I say 4 years? Because I had to do it every day to help myself understand that, oh, if I'm going to do this with a client and it doesn't work on me, how do I really make them feel that this is going to work for you as well? Meditation का या therapy का एक जो stupid सा misconception है वो ये है कि you'll get into meditation,
बत्तियां बंद करके चौंकड़ी मार के हम तीसरी उंगली दबा के हम ओम ओम करेंगे और मेडिटेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है. That's not how it works. It could be a guided meditation. It could be you sitting here. अभी वो नहीं करते बस, ठीक है, ये ना करवा लेना, ठीक है. नहीं ये ना भी, ठीक है, अभी फील नहीं आ रही. अच्छा, so yeah, so what I did was that I practiced it every day because I figured that your brain is just like that child, your mind is just like that child who is very rebellious. और अगर उस बच्चे को आप कह दें कि वो दीवार के सामने पीछे जाके मुंह खड़ा करके खड़े हो जाओ and don't talk, what would the kid do? Do that thing. अच्छा, इतना ओबीडिएंट बच्चा. अच्छा नहीं, पाकिस्तानी बच्चा, ऑपोजिट. क्या करेगा वो दीवार के पीछे जाके शोर मचाना शुरू कर देगा, ठीक है, रिबेलियस होगा, बदतमीजी भी करेगा, शोर मचाएगा. अच्छा, दूसरा ये तो ये भी एक साइकोलॉजिक थिंग, ये मैंने अगेन बिकॉज आई एम मूवी फ्रीक हूँ मैं, वो उसमें डायलॉग है कि do not think of white elephants. What would you think? Think of white elephants. तो वो तो जो मना करोगे इंसानियत वो करने के लिए. Yeah, you're right. So anyway, आप meditation जब आप करते हैं तो you tell your mind to stop thinking, and that's not possible. You're thinking even when you're sleeping, and this is why dreams are formed, right? And so you can't ever stop thinking. So in meditation, in therapy, you have to learn to let the thought come and let the thought go while you're accepting the emotion that you're feeling. One of the things that I think people feel that ye zindagi mein hona chahiye ki I want to stop feeling bad. I want to stop feeling angry. I want to stop not being annoyed. You can't stop that. It's a very natural emotion. You can learn to manage with it. You can learn to calm yourself. You can learn to change the mindset that is triggering all of that, but you can't stop it. Do dreams have something related to ऐसे क्यों देख रही हो तुम? जैसे कि मैंने कोई सवाल, मुझे फ्रॉइड याद आ गया. क्या याद आ गया? फ्रॉइड. Okay. Okay, so do dreams have something related to this psychological things? Freud says that dreams are the royal road to your subconscious mind. ठीक है. Freud इसलिए याद आया था. Freud is one of the most controversial psychologists that the world has ever had. जैसे ही कोई ड्रीम्स की या ड्रीम एनालिसिस की बात करता है तो हम फौरन से एकदम से फ्रॉइड याद आता है. और फिर फ्रॉइड याद आता है तो कंट्रोवर्सी याद आती है. कंट्रोवर्सी याद आती है तो फिर ये शक्ल बन जाती है. सो फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा काम किया ड्रीम एनालिसिस पर, एंड ही essentially was a general physician, a German general physician, and he sort of took a lot of information from philosophy, and psychology is actually a stemming field or subfield out of philosophy and sociology. And he figured that, whenever we are trying to snub down things, it shows in some way or form. Your body starts to talk to you. So for example, if you're not addressing a mental issue, it could be a stress, it could be an emotional instability, and you start to experience headaches very often. Or you start to experience maybe a physical ailment, जो कि कई दफ़ा लोग कहते हैं जी शुगर हो गई, टेंशन बड़ी लेती है तो फिर शुगर हो गई सानू, फिर ये पता नहीं जो भी मसले होते हैं. ठीक, कार्डियोलॉजी ज़्यादा रिलेटेबल होती है with stress, I think. A lot of times people would feel lethargic. So your body starts to give you signals of how you're not addressing something. And so it has all these ways of showing it to you, and dreams are one of those ways. Okay. Do colors have something again in this? Colors? In what sense? For example, yellow color, red color, black color, कि कोई sign है, कोई signal है, या कोई कपड़े पहन के जा रहा है तो उससे ऐसे कुछ हो जाएगा sign. Acha, so there's this one mental disorder. I wouldn't name it because I don't want to label the people who are dealing with that disorder. But, there would be disorders where people would start to wear very flashy clothes. And there would be days when they're very low, so they would wear very dull clothes. Somebody's feeling super excited and very thrilled one day, and the other day they're not, right? So वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे होते हैं, again going back to that body language part जो हम शुरू में you were super interested in. Color psychology
or how somebody is trying to portray themselves in what they wear, how they talk, what is their body language, how they look at you, what is their way of smiling. Obviously ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको over time पता चलती हैं. Maybe this is my normal smile and you might think it's weird, right? And so maybe seeing me once, twice, thrice, you would understand that oh, this इसका normally यही है, ये normally पागल है. Okay, so इतना खास लिंक नहीं है, but वो टाइम के साथ पता चलता. Perfect. Do we have any more questions? Meditation is linked to spirituality? Spirituality? ये कौन सवाल भेज रहा है आपको? बस ये हमारी टीम बैठी है. Okay. अच्छे सवाल है? हाँ सही है. This guy. Okay. Good guy. अच्छा. So कैमरे में से पहले इसने मुझे बोला ये तुम्हारा भाई है. मैंने कहा हाँ, लगता नहीं है. It's not a compliment because वो ज्यादा प्यारा है. ये आपको लग रहा है ना कि वो ज्यादा प्यारा है, और मैं ये नहीं कह रही कि आप ज्यादा प्यारे हैं. मेरा दिल ना रखें, मुझे पता है कि कौन ज्यादा प्यारा है. Okay, good. जी. You love your brother and this is why you think he's prettier than you. But he is prettier than me. It's not about being, loving someone. Okay, this is a fact. Anyways, continue. Coming back to the topic. क्या कहते हैं वो क्या होती है आंखों में? ये आपकी आपकी नजर तलाश, या तो आप बता दो क्या कहते हैं? Insecurity कहते हैं इसको. Okay. अच्छा. कहाँ थे? Spirituality. Yeah. Yes. I think there's a very drastic difference between being religious and being spiritual. You might not be somebody who follows any religion, but you could be very spiritual. Somebody who's... Oh, sorry. Very important question. Because you deal with a lot of people in Pakistan, with a lot of Muslims. तो does religion come in between? और कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है? मुझे बहुत दफ़ा ये सुनने को मिला है कि we are coming to you because you don't look as religious. Oh. Because people think that maybe, again, not something that I believe in, but I think they would say that somebody who looks very religious, they might judge us for the wrong things that we've done. And I think it sort of makes sense कि उस तरह से कि यार अगर कोई बंदा बहुत रिलीजियस है और मैं उसको जाके बताऊं कि यार मैंने फलां हरकत कर दी थी, तो आपको थोड़ा सा जजमेंट भी फील होती है और उसके अलावा आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. लेकिन हर रिलीजन और मेनली क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसमें तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कि अगर कोई बंदा कोई फॉर एग्जांपल कोई सिन है, गुनाह जो भी है, तो उसकी तो माफ़ी है, उसका तो मसला कोई नहीं है. अल्लाह में ये तो बहुत बड़ा है. But don't we judge? We still do. Like how many people would think about this? कि oh, it's not for me to judge. It's for God to analyze this. तो वो तो फिर बंदे पर्सन टू पर्सन आ गया ना, वो उस पर रिलीजन का ताल्लुक तो कोई नहीं. हाँ, रिलीजन का नहीं है ताल्लुक. लेकिन खैर people, I think they're more cautious when it comes to somebody who's religious because we, again, social image है ना. I want to portray the best of myself according to what you would think is good. तो आपके लिए when I'm interacting with you, I would try to talk, I would try to look like what I would think कि oh, ये यहाँ पे appropriate होगा. Do you give people some certain exercises, medicine, या फिर किसी और तरीके से? How do you heal them? So, as a counseling psychologist, you're not supposed to give any medications. Medications जो हैं वो सिर्फ एक MBBS डॉक्टर दे सकता है. हमारे मुल्क का एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि हम साइकियाट्रिक मेडिकेशन ऐसे दे देते हैं जैसे कैंडी होती है. It's not just an indirect experience. I've had a very personal experience myself. I had this nerve strained last year. And I could not figure out that what's going on. I went to this orthopedic and then this physiotherapist and then a neurologist and I'm trying to figure ki kya masla hai. And nobody's really able to pinpoint except this, कि Mary, stop going to the gym. Because you lift weights, this is why this is happening. I literally had to stop going because it was so painful that I could not work out. I gained a lot of weight and that was making me feel worse about myself कि क्या और I'm not able to understand. मैंने literally ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ जाके किसी डॉक्टर से पूछती हूँ कि क्या सीन है. I started to look for people online as well. Eventually, this person, I go to this neurophysiologist and she gives me these tests and then हम टेस्ट करते हैं, सारा कुछ होता है. Or she says, you know, Mary, you need to get a third opinion. So first a neurosurgeon who's asked me to take all the tests, neurophysiologist test लेती है, वो मुझे कहती है ये मसला लग रहा है, but you take another opinion because कई दफ़ा लोग ना छोटा सा मसला होता है और ज़्यादा बन जाता है वो, तो वो ट्रिगर हुई हुई है कोई चीज़. I go to this neurologist who's apparently one of the best in Pakistan, and he first says that आपका कोई मसला नहीं है.
or it's just all in your mind. He has not yet seen my reports, nothing. Okay. और मेरे पास एक इतना थद्दा था ना मेरी रिपोर्ट्स का, और उसने जैसे किताब को आप ऐसे करके स्किम करते ना, तो उसने ऐसे करके स्किम किया उसको। दरमियान में उन्होंने पूछा कि यार वो फलाना डॉक्टर जो था वो उसने रेफर किया इनको, ज़रा पता करें कि वो डॉक्टर कौन है। अच्छा, द फर्स्ट मेडिसिन ही राइट्स टू मी is an SSRI. SSRIs are used for depression. Oh. The next medicine he writes to me was an anti-epileptic, जो कि एक epilepsy की दवाई है. Or the third medicine he writes to me is a gastrointestinal medicine. This is very dangerous. Very dangerous. And I look at the medicines and I'm looking at this guy and I say, can you please educate me कि अगर मुझे वाकई में कुछ ऐसा मसला है तो please tell me कि क्या मसला है. He's like, आपने बस 1 महीना इसको लेना है and please no questions, thank you very much. और ये सिस्टम है. I get out, और मैं पहले उसको बोला कि भाई साहब ऐसे नहीं होता, मतलब क्या मतलब, and he yet did not know that I'm a psychologist. अगर मैं ये बता देती तो Saud, this would have been a more bigger problem. क्योंकि अब हमारा एक वो प्रोफेशनल कम्पिटिटिवनेस आ गया ना कि हाँ पता तो है तुम्हें, तो फिर जाओ कर लो अपना हल, खुद ही कर लो. I get out, I call the neurosurgeon and I say, okay, this is what they've said. So it doesn't make any sense to me. And he says he was so disappointed in his colleague, and he's like, and I'm sure वो किसी अच्छे जगह पे, हाँ जी. And he's like, I'm sorry. I see clients coming to me taking medicines for 15-20 years, and when I would ask कि आपका diagnosis क्या था, they would not know. And they're taking medicines mindlessly, without knowing, without education of it. So मेरा काम ये होता है, yeah, as a counseling psychologist, you're supposed to figure out, dig out what is the root of this issue. If you are depressed, if you are anxious, if you have social anxiety, if you are dealing with bipolar, if you have delusions of any form, where did it come from? When did it begin? What was the parenting like? What was the environment like? What was your education? Were you bullied in life or not? Do you have any deep insecurities of yourself? Because ये सारी बातें, अब ये कुछ मैंने बातें बता दी हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, और इसकी वजह से फिर वो जब एक क्रॉनिक चीज़ चलती जा रही है तो उसको आप एड्रेस नहीं करें, उसकी वजह से यू एंड अप हैविंग an emotional instability or a mental disorder even. अच्छा, बीच में मैं ऐड करना चाह रहा था बट मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था कि जो हम लोग मेडिसिन डॉक्टर्स इस तरह की आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आप खाना शुरू कर देते हैं, अक्सर से बल्कि ज़्यादातर आजकल केसेस वो बोले हैं बिकॉज हमें लगता है कि जो रिहैब्स वगैरह हैं इनमें सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स आते हैं. ये जो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज व्हाट दे से कि मैं तो मेडिसिन खा रहा हूँ, इसका तो इशू कोई नहीं है, दे ये डिप्रेशन की मेडिसिन भी चल रही हैं और ये लग जाती हैं और ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ये तो माइंड अंदर से खाती रहती है. ओके, सो दिस वाज मेरी परवेज़ मेरी. इट वाज लवली हैविंग यू. जाते जाते एक सैड बात हम ये करेंगे, ब्रेन ड्रेन की जो पाकिस्तान में हो रहा है. You listen to the sorry. हाँ, मैंने कहा ना करो. ना करूँ. करो. Listen, you listen to the conversation. Very good, mind refreshing. The person, she is amazing, and she's going abroad. पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं. क्यों जा रही हैं पाकिस्तान छोड़ के? हम वापस आएंगे यार. हाँ. जाएंगे, पासपोर्ट लेंगे ताकि पूरी दुनिया जाएं और फिर लेकिन वापस जरूर यहाँ पर. कैमरे के पीछे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. सब बता दूं. बेस्ट फ्रेंड बना लो. थैंक यू मैरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जाते जाते इस कैमरे में मैसेज टू द यंग पीपल एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ करियर वो फॉलो करना चाह रहे हैं बिकॉज आई एम श्योर इसके बाद पीपल विल लुक अप कि इस करियर को आगे लेके जाएं. व्हाट वुड यू से टू देम? I think अगर career wise अगर मैं बात करूँ तो I think as I said earlier, if you're somebody who's trying to pursue any form of career, whether it's psychology, whether it's business, whatever you want to do, I think there are some things जो कि एक protocol होता है, एक playbook होता है किसी भी काम को करने का, but at the same time if you're not you, if you're not somebody who adds value to what you're doing, you might not be able to be as successful as you might want to be. So that's professionally speaking. Otherwise, I think there is a very important concept which I talk about all the time, and that is that your mind, body, and your soul are completely connected to each other, and you cannot ignore the mind while you're taking care of the body, and you cannot be feeding your soul while you're ignoring your body or your mind. So be mindful of that.
ओके, सो दिस वाज मेरी परवेज। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। लाइक कर चैनल, सब्सक्राइब कर चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।